So yeah, students, we have finished yesterday till interesting facts. Today we will be doing from here. I have told you to write the examples of application software and system software. Okay, you will be writing in the book only. There is no need to make the notebook. Okay, you will be doing question answer and everything in the book only. Okay, so now let me start. Hardware and software are dependent on each other. What do you mean by that? I have told you yesterday also that without hardware software cannot work, and without software hardware cannot work. So they need each other. दे बोथ नीड ईच अदर मीन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ओके, अगर हार्डवेयर ख़राब होगा तो सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है, और सॉफ्टवेयर ख़राब होगा तो हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट द हार्डवेयर. Okay, a computer without software will not work. Okay, even if you are having a proper monitor, CPU and keyboard and mouse and everything, but your software is not working, so you will not be able to work on the computer, because in the starting itself you will be able, when you open your computer, when you on your computer, you always see operating software. Okay, so if there is some problem with your Windows or something like that, so and then so your computer will not work. आ सॉफ्टवेयर CD विदाउट अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड. अगर आप नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो आपको उसमें विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती है. ठीक है, विदाउट दैट आपका कंप्यूटर जो है चलेगा नहीं. ठीक है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स आपको डालने पड़ते हैं. कुछ प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें जो है आपको खुद डालनी पड़ती हैं. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, हाउ डज इट वर्क? अभी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग. इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल के हिसाब से जो है आपकी कंप्यूटर जो है वर्क करता है. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. It works by the following the input, process and output cycle. So input is whatever the instruction that you are giving to the computer, that is input. Through microphone, through keyboard, through mouse, through scanner, you can give the input. Okay, then it is processed in CPU. Okay, it stores and process the instruction we feed into it. Okay, so it always process whatever input we are giving to the computer, and then afterwards the result comes out, that is output of your computer. So output comes out by the from the speakers or from the printer or from the desktop. Okay, you can see the output from the desktop, printer or speakers. Okay, so the computer accepts input, process it and gives the result. Like in your body also, when you are giving something instruction, even if you are touching something, then your brain process every information, then you will move according to the information processed by your brain. So similarly here also the CPU is the brain of the computer. A computer receives data और instruction through input devices. Okay, जो computer होता है वो आपकी सारे के सारे data और instruction जो receive करता है input devices से. I have already given you examples of input devices. The entered data is processed or changed into meaningful information by the CPU. Okay, the language you speak, it cannot be understood by the computer. Okay, so what is happening here? It processes your instructions and it changes into the meaningful language of the computer and then gives you an output. So the result of processing are displayed through the output devices. Then we have computer memory. Like we do in our brain also we are having a memory. Okay, आपके brain के अंदर जैसे आपके पास में memories होती हैं, वैसे computer के पास में भी it is also having a memory. So okay, so just as we have memory to remember things, a computer also has a memory. A computer uses its memory for processing and storing data and instructions. Okay, जो भी चीज़ें आपने input में डाली हैं उसको process करने में और data को store करने में. For example, if you have made any file, so it has to be processed or it has to be open. Okay, all the instruction that you are giving, it has to be memorized, so it is kept in the computer memory. A computer can keep on storing for years, बहुत सालों तक. If you know that, even if you have saved a song like 3-4 years back, it will, if you have not deleted that song, it will remain in your computer. Okay, so this data can be retrieved. Okay, you can take back. Okay, you can bring that data back with the help of computer memory as and when required. Whenever you required this instructions or the data, you can take out from the computer memory. Okay, so now what is memory unit? What is memory unit here? A computer can understand only the binary language. Like for example, there are some languages that we can understand properly, but there are many languages that we cannot understand. For example, if we are talking about French, Korean or Japanese, whatever languages. Okay, so all languages you cannot understand. Similarly, the computer cannot understand Hindi, English, Punjabi. Okay, so how it will understand your instruction? It will understand your instruction in binary language.
Binary languages comprises of only two digits, that is 0 and 1. Okay, there are only digits in the binary language, that is 0 and 1. This is because a computer is an electronic machine and cannot understand can only understand two state, that is on, which is represented by 1, and off, which is represented by 0. Binary language consists of zeros and ones. That's why binary languages consist of zeros and ones, which are known as binary digits or bits. Okay, so these digits are called binary digits or bits. A bit is the smallest unit of information which is computer can process. Bit जो है सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी कंप्यूटर की जो प्रोसेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन. रिमेंबर बिट मीन्स ओनली बाइनरी डिजिट्स, दैट इज 0 and 1. कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स. कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो बाइट्स में मेजर होती है, एंड बाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स. ओके, a byte is the basic storage unit. This is the smallest unit of information, and the basic storage unit is byte. One byte is one character. It can be alphabet, it can be a digit, it can be a symbol. That is, for example, if you are making any brackets or and sign or apostrophe sign, whatever. Okay, so these are the characters. A character can be one alphabet, one and number on one symbol. One byte consists of 8 bits. One byte जो होती है 8 bits के equal होती है, and in simple terms you can say higher the number of bits, the memory will be bigger, capacity of storing data will be bigger. So there are other units also. For example, if you want to measure vegetables and fruits, you need kilograms and grams. Okay, sometimes you need for smaller unit you need milligrams also. When you are measuring milk, liquid, okay, so you need liters, kiloliters, or sometimes milliliters also. Okay, when you are measuring distance, okay, so we have kilometers, meters, millimeters, like this. Okay, so similarly in computer also we are having units for the memory. So we are having bytes, that one byte is equals to 8 bits. Kilobyte, 1 kilobyte, that can be written 1 KB is equals to 1024 bytes. Megabyte, 1 megabyte is equals to 1024 kilobytes. Okay, आपका एक ऊपर चला जाता है. अगर आपको चेंज करना, दिस नंबर विल रिमेन सेम, 1024 विल रिमेन सेम, एंड इट कैन बी चेंज इनटू द स्मॉलर यूनिट्स. Okay, so 1 gigabyte is equals to 1024 megabytes. Okay, like this, terabyte is equals to 1 terabyte is equals to 1024 gigabytes, and 1 petabyte is equals to 1024 terabytes. Like this only, 1 exabyte is equals to 1024 petabytes, and like this 1 zettabyte is equals to 1024 exabyte, and 1 yottabyte is equals to 1024 zettabytes. Okay, so like this you can change your bytes into memory, you can change into other units also. Types of computer memory. So there are two types of computer memory. One is primary memory and one is secondary memory. Let us learn about the computer memory in detail here. The computer memory can be classified into following two types: primary memory and secondary memory. Primary memory is memory that is also known as main memory or internal memory. This primary memory is directly accessible to the CPU. Okay, ये आपके CPU से directly accessible होती है. Okay, and the primary memory is directly accessible to the CPU, and CPU reads the instruction जो है stored in the primary memory में जो भी stored होती है instruction वो read कर सकता है continuously and execute them as and when required. आप required जब भी होगा तब उसको use कर सकते हो जब भी required होगा. So primary memory is also divided into RAM and ROM. Okay, so the primary memory can be divided into two parts, that is RAM. RAM की full form है random access memory, and ROM की full form है read only memory. So RAM stands for random access memory. It is read and write memory only. Information जो है written into it and read from the RAM. When a computer जब start होता है, it loads the operating system into RAM. तो आपका operating system जो है load होता है RAM के अंदर, और working जो है इस program की start हो जाती है, and you are actually working on the RAM. Means जब आप operating system start करोगे तो actually आपका RAM पे ही start होगा. RAM जो है volatile memory है. Volatile का मतलब क्या होता है? जब तक आपका system on है तब तक ये जो है information जो है आपका computer जो है वो save रखेगा, उसको स्टोर रखेगा. जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है वैसे ही आपका जो इन्फॉर्मेशन जो भी वर्क हो रहा था वो इरेज हो जाएगा. ओके, सो मीन्स जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो स्टोर रखेगा, उसके बाद में वो भूल जाएगा. ओके, सो ऑन तक आपको याद रहता है और उसके बाद में भूल जाता है. रैम जो है, द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर जो है वो इफेक्ट भी डालता है कि सिस्टम जो है स्मूथली रन कर सकता है कि नहीं. जितनी अच्छी रैम होगी, जितनी बड़ी रैम होगी, स्टोरेज कैपेसिटी होगी रैम की, उतना स्मूथली आपका कंप्यूटर जो है वर्क कर सकता है.
ROM. Now ROM stands for read only memory. It is that part of the computer memory in which data is pre recorded. पहले से ही रिकॉर्ड होता है इसके अंदर जो भी डाटा होता है, एंड वंस द डाटा हैज़ बिन रिटर्न इनटू रोम इट कैन नॉट बी रिमूव्ड. जैसे कि वो वॉलेटाइल था तो ये नॉन वॉलेटाइल है, इसके अंदर से डाटा रिमूव नहीं कर सकते हो आप. रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड रिटेन डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर जो है स्विच ऑफ होगा तब भी इसके अंदर डाटा जो है रहेगा. इन मोस्ट कंप्यूटर रोम इज़ यूज फॉर स्टोरिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर जो है आप स्टोर करने के काम करते हो रोम के अंदर. सो इसके जिसको हम बायोस भी कहते हैं, BIOS, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू लीड दी ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन. ओके, तो सॉफ्टवेयर जो है हेल्प करता है लोड करने में ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी आप कंप्यूटर जो है ऑन करते हो. सो देयर इज़ अदर टाइप ऑफ मेमोरी दैट वी कॉल सेकेंडरी मेमोरी. अब आपको कई बारी चीज़ें जो हैं आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा अगर आप जो है स्टोर कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर जो है वो जो है स्मूथली वर्क नहीं करेगा. सो समटाइम वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो. ओके, इन योर फोन्स ऑल्सो वी आर हैविंग सेकेंडरी मेमोरी in the shape of memory card or something like that. Okay, so extra memory we can say. So secondary memory is also called auxiliary memory, external memory or a backup memory. Okay, since the RAM is not permanent, a computer system required secondary memory की requirement होती है to hold and data program permanently. आपको प्रोग्राम को और डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की यूज़ करना पड़ता है. दी CPU कैन डायरेक्टली असेस डाटा जो है उसमें से असेस कर सकते हैं. प्रोग्राम और सेकेंडरी मेमोरी दी डाटा इन प्रोग्राम मस्ट बी फर्स्ट लोडेड इन रैम में स्टोर करना पड़ता है, उसके बाद में वो कर सकता है. कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी जो है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है डज नॉट स्टोर डाटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं करता. तो इसीलिए हम जो है सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई सेकेंडरी मेमोरी जो डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. तो उसका एग्जांपल क्या है? हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव. देन वी यूज टू हैव फ्लॉपी डिस्क एंड पंच कार्ड लाइक दिस. ओके, सो व्हाट इज़ हार्ड डिस्क? इट इज़ ऑल्सो देयर इन योर कंप्यूटर. CPU बॉक्स में होती है. ये मेन सेकेंडरी डिवाइस है प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है इसमें स्टोर हो सकता है. जितना भी वर्क डन आप कंप्यूटर में करते हैं और जो स्टोर होता है वो मोस्टली हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है. नाउ डेज हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी जो है 1 टेराबाइट जितनी आ रही है और बहुत कॉमन है. इससे ज़्यादा स्टोरेज वाली कैपेसिटी वाली जो हार्ड डिस्क हैं वो बहुत कॉमन है मार्केट के अंदर. सीरीज़ जो है कॉम्पैक्ट डिस्क इसके फुल फॉर्म है. इज़ अ सर्कुलर शेप होती है, कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा जो है स्टोर हो जाता है उसके अंदर. कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव जो है इज़ रिक्वायर्ड टू रीड डाटा जो है ओनली रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है. CD कैन बी ईजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो है ईजिली कैरी कर सकते हैं. जैसे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिलते थे जो CD के अंदर आपको स्टोर करके लेके आने होते थे. कई बार आपको प्रोजेक्ट्स या वीडियोज़ मिली है जिसके अंदर आपको CD के अंदर सेव करके लेके आने के लिए होती थी. सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन दैट ऑल्सो. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ CDs. ओके, सो सीरीज़ जो है 2 टाइप की है, CDR एंड CDRW. CDR इज़ रिकॉर्डेबल CD है. दैट वंस रिकॉर्डेड कभी भी रिमूव नहीं कर सकते उसमें से जो भी आपने डाटा स्टोर कर दिया. CDRW इज़ अ री राइटेबल CD होती है जिसके अंदर से डाटा जो है दोबारा से इरेज करके उसको री राइट किया जा सकता है. न्यू डाटा जो है स्टोर किया जा सकता है. DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क है और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं हम इसको. ये बिल्कुल CD की तरह ही दिखती है. DVD इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 6 टाइम मोर डाटा दैन CD. ओके, ये 6 टाइम ज़्यादा स्टोर कर सकती है डाटा दैन CD. ऑल्सो DVD कैन बी सिंगल और डबल साइडेड भी हो सकती है. ओके, सो इसके अंदर आप दोनों साइड पे डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं और दोनों साइड पर अलग अलग डाटा स्टोर कर सकते हैं. DVD कैन बी यूज टू स्टोर मैनी मूवीज़ वगैरह स्टोर कर सकते हैं. पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव्स आपने देखी होगी. ये पेन ड्राइव्स की पिक्चर्स हैं फ्लैश ड्राइव की. पेन ड्राइव इज़ अ स्टोरेज डिवाइस है विच इज़ वेरी स्मॉल होती है साइज़ में. एक USB से कनेक्टेड होती है. दिस इज़ कॉल्ड USB, यूनिवर्सल सीरियस बस. पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस होती है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. वी कैन यूज़ अ पेन ड्राइव टू कॉपी डाटा, सॉन्ग्स, गेम्स, प्रोग्राम्स वगैरह. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करना हो तो पेन ड्राइव वी कैन यूज़. डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती है पेन ड्राइव की, 2 GB से लेकर 64 GB तक एंड मोर. एंड ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल है. इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा में एग्जाम्पल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज भी हैं डेट वी यूज़ अर्लियर आर floppy disk or zip disk and punch card. These are all are the devices, storage devices that we used earlier. Okay, nowadays we do not use these kind of storage devices. So this one is punch card and this one is floppy disk. So students, by this we have completed our first chapter. So now you will be doing this question answers and fill in the blanks in your book only. No need to do it in the notebook. You will be writing with the pencil and then you can complete your work in your book.
Okay, so tomorrow we will be starting with our second chapter. Okay, so bye bye students.